जो भी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, 270 पीपल डाइड एट द सेम टाइम। Yes. तो आपने कहा था कि जो ट्रॉमा उनको फेस हुआ उसका क्या होगा? क्या वो आगे पास ऑन होगा? Definitely pass on होगा. Definitely किससे pass पास on. ऑन होगा? Trauma doesn't travel through your blood. It Okay. travels through emotion. अच्छा, Anybody who's going to be more sensitive, more feeling, more empathetic is going to catch on to and latch on to that trauma. कैसे हुआ So, है काम सब? मेरे family में somebody passed away in a plane crash. ठीक है। Right? But that person is very distant to me. But I feel it more than everybody else. I feel it more than their own parents. I feel it more than their own wife or children. Okay. I feel it more. I feel that loss more in my DNA as compared to the blood. I am absorbing it more. I am representing it more. Maybe you're thinking too much about the person, about the episode, about the person. But why would you think about only that one person? It's all karmically connected. You know, so you may have a very strong karmic tie with somebody who's a very distant cousin to you than your own brother. ओके, इसे फिर से करते हैं कि जो 270 लोग की डेथ हुई इस एयरप्लेन क्रैश में, इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। 270 पीपल एक ही इंसिडेंट में, एक ही जगह, एक ही टाइम पे दे लूज देयर लाइव्स। सो फर्स्ट थिंग, क्या वो डिस्टाइन था? There are two ways again to look at it. One says everything is written, another says everything is not written. The only thing एक is, बताओ। It's like, see, those 270 people came together because they all had signed up for a same soul contract. One of the things that they all wanted to experience together was a death by a plane crash. they signed up When for we it. decide, yeah, we signed up for it. When we choose, so okay, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. बिल्कुल। As a soul, you go to your soul plane and you decide this planet, this parent, this life, these upbringing, these issues, these traumas, this death, this illness, this death. इट्स ऑल साइंड। All signed. ठीक है। Then you forget about it. Done. Because याद रहेगा तो फायदा नहीं है ना वो सब होने का, right? So why only these 270 people came together is because they all had that in their soul contract. ठीक है। This is what they wanted to experience as death. So this is what they did. They came together, including the pilots, including the crew, including the people, including the infants, including the children, everyone, right? अब ये एक it's like a trauma site, you know, with 270 people. When you have a traumatic incident like this, or a war, or a genocide, it becomes a traumatic site and it becomes like a wormhole in the universe. It's like a dent in the universe, Okay. which is always radiating that traumatic energy constantly, you know. And that constant energy is picked up by someone who's karmically connected to them. That karmically connected person can be a friend, can just be a doctor, can just be, you know, your distant cousin, can be your masi, your mama, somebody who's going to feel that trauma more than anybody else. And then that person is going to do things to release that trauma. मुझे लास्ट पार्ट नहीं आया समझ कि जो 270 लोग थे उन्होंने सबने साइन किया था अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि उनको अपनी डेथ एज एन एयरप्लेन क्रैश में चाहिए, which is जो like लोग कि ऐसा- हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हाँ, you know, right. so it is also the similar thing ना. एक दिन के अंदर हॉस्पिटल्स में कितने डेथ्स होते हैं, राइट? हम उसका काउंट नहीं रखते हैं, बट ऑल दोज पीपल डिसाइडेड टू कम एंड डाई इन द हॉस्पिटल, राइट? तो वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है. कि वी डिसाइड हमें कहाँ एक पैदा होना इलनेस है। से हम इस हॉस्पिटल में जाएंगे एंड दिस डे आई एम गोइंग टू ब्रीथ माई लास्ट. ऑल राइट, दिस इज ऑल लाइक destined कि हमने उसको लाइक साइन करके आए हैं कि ऐसा Not चाहिए। destined. Destined means you're giving the charge to somebody else. This Someone is what else. you chose. अच्छा, आई चोज। This is what you chose. ओके, कि मुझे इस लाइफ में यहाँ पैदा होना था, इस बॉडी में पैदा होना था, बिल्कुल। और मेरी मौत इस तरीके से होगी। इट्स ऑल So you tie your beginning and your end, and then you decide everything that is going to happen in between. इन द रियल टाइम ओवर हियर, या Yes, फिर वो in भी the पहले real से time. लिख के आया हूँ मैं? नहीं, आप लेके आए हो कि ये मेरा टाइम ऑफ, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बी, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डाई, एंड आई एम गोइंग टू चूज एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन बिटवीन. ओके, ठीक है। So this concept of free will that people talk about is very shady, because if I ask you, what is going to be your next thought? It's in my control, I can think about it. It is not in your control. क्यों?
आपका नेक्स्ट थॉट आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम थॉट्स क्रिएट ही नहीं कर सकते. गो हेड दिवस, क्रिएट अ थॉट. नहीं, We मतलब only मैं क्या करने attract वाला हूँ? thoughts. अच्छा, ओके. We only attract thoughts. Our mind has no capacity to create a thought. जो हम थॉट अट्रैक्ट करते हैं, हमें वही लगता है कि हम वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं. दैट्स द इल्यूजन दैट द माइंड गिव्स यू, बिकॉज द माइंड वांट्स टू कंट्रोल यू. तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? ये बता करके कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ. बट यू आर ओनली अट्रैक्टिंग थॉट्स. आपने कोई चीज़ देखी, आप कुछ बात कर रहे हैं, बात करते करते कुछ दिख जाएगा, सडनली माइंड उधर चला जाएगा. राइट? अगर इतना ही आपका पावर ऑफ क्रिएशन होगा तो आप वहीं रहोगे ना. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी again is created because we want to think a certain way. We want to lead the human race in a certain way. We want to condition the human race in a certain way. But the moment nobody wants to take responsibility of choosing something wrong, because ये सारे experiences को हम wrong term करते हैं. ये कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान अपनी डेथ क्यों ऐसे चूज करेगा? हाँ, ये सवाल बट क्यों आएगा नहीं mind. करेगा? But क्यों कोई तो करेगा? तरीका चूज करेगा ना जाने का. But not like this ना कि बस मैं But why ऐसे not? मर जाऊँ. The soul doesn't understand pain. The soul only understands growth and evolution. उसको तो सोल प्लेन पे पेन हो ही नहीं रहा ना किसी भी चीज से. He or she is only, or it is only gaining experience. Because with every experience, it is becoming better. It is understanding the emotions better. It is understanding the vices and the versa better. It is understanding what it takes to be in that situation. It is understanding that fear of those 5 seconds before you know you're going to die. That experience. Okay. That is going to make the soul level up. The harder the battle, the better the soldier.